Hello, everyone, and welcome to one more interesting analysis by the team Procapitalist. I'm Dr. C. Purvaa Jain, your finance growth coach. This video is completely for educational purpose. इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक या टिप को प्रदान करना नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें और साथ ही सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कनेक्ट करें। आज हम इंडिया के एल्यूमिनियम सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्री ट्रेंड क्या चल रही है और साथ में यूनियन बजट 2025 का क्या इम्पैक्ट रहा। कंपनी अंडर एनालिसिस है हिंडाल्को, व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द मेटल ऑफ द फ्यूचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले की मार्केट ड्राइवर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द बूस्ट ऑफ एल्यूमिनियम सेक्टर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ऑटोमोटिव और ईवी इंडस्ट्रीज का quick participation, energy transition, and export के अंदर growth. So, when we talk about aluminum market revenue per se India, right? So, the numbers are very interesting and impressive. ये numbers कुछ इस तरह से हैं कि around 13 to 14 US dollar का market revenue from aluminum itself, metal itself is around 13 to 14 billion dollar USD is expected for the year 2025, and this is definitely going to increase over a period of time. When you talk about the production of aluminum in India, 2024 के financial figures बताते हैं कि around Hindalco produces 1370.74 metric tons, and that's a big number. So let's try to explore Hindalco as a company. And before getting into fundamental and technical analysis, first, let's quickly understand what is going around at the macro level. So, at the macro level, recent news of Sunday, wherein US President Donald Trump mentioned very clearly that he is going to introduce around 25% tariff on all steel and aluminum imports into the US. With this, higher tariff means India का aluminum is going to become more expensive for US buyer. जब expensive होगा तो definitely low level of export हो सकते हैं. इसी दौरान our Prime Minister Modi ji is at visit to US, and he is definitely going to bring some good news around negotiation for the reciprocal tariff, which Donald Trump mentioned, right, for the steel and aluminum imports. When we talk about the industry level, when we talk about the company level, Hindalco Industry, the Q3 results are out. With regard to this, the company reported a net profit of 2,331 crores year-on-year basis. The profit jumped by 71%. That's a very strong number. However, the revenue from operation marginally declined. Apart from that, when we talk about the US subsidiary of Hindalco, its net profit income basically fall by 9%, which is influenced by factors such as flood-related damages in Switzerland and increased scrap cost. So this is again one of the component. However, there are mixed results for Hindalco altogether, because Hindalco is also great at exploring doing some major huge capex across the country. So this is about Hindalco. And let's try to deep dive into the business of Hindalco. So Hindalco operates in complete 7 business domains. It has a representation in 3 different industries, that is aluminum, copper, and chemical. And the 6 major areas of operations being these. So let's get into fundamentals and technicals of the company. So this is all about Hindalco, the flagship company of Aditya Birla Group, with 50 units and have a global footprint in around 10 countries. And it has different, product offerings, industries, and operations, which we just spoke around. So let's get into the fundamental analysis of the company. फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें जाना है screener.in पे, and here we go. So screener.in gives basic idea about the fundamentals of any company. Market capitalization of Hindalco is around 1,34,384 crore, which is a big number. The book value and current price reasonably nearby to each other, because there is a great amount of correction in the market. चलते हैं Hindalco Industries का complete top down analysis की ओर. Profit and loss statement
जो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट नंबर को दर्शाता है। पिछले 3 से 5 सालों के अगर सेल्स नंबर को देखा जाए तो 132,000 से 195 से 223 एंड 215, दिस इज अ गुड नंबर, good increase in the sales number. And apart from that, when we talk about the operating profit, the operating profit of the company slightly improved right in the March 2022, but macro factors और economic level के factors जो impact हुए हैं उससे आज कुछ समझने की कगार में है. It's the operating profit is as good as 29,649 crores till date. So these are the numbers which are available on the screener website. Now we talk about the net profit of the company. The net profit of the company is significantly positive, is a good sign. 13,000, 14,000, and now 19,923. With this, when we talk about the EPS of the stock, the EPS of one share as on date, it is slightly improved from 44 times to 45 times to 61 times as on date. Dividend policy को देखें तो dividend payout is almost stable these days. Around 6 to 8% का dividend payout है. 6 to 8% is the dividend payout. So overall, the profit statement shows that has a healthy bottom line and top line. Now let's talk about the balance sheet of the company. The balance sheet of the company, two important elements, liabilities and assets. When we took a quick look around the balance sheet, the last 3 years number says that the reserves of the company from 77,000 approx has been increased to 94,205 thousands, right? So, and so on. So reserves are very positive, significant, which shows that प्रॉफिट कंपनी का स्ट्रांग है, तभी कंपनी के रिजर्व्स आज की तारीख में स्ट्रांग है. वहीं कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी का डेट रिजर्व इक्विटी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर तो नहीं, 50-50% वाला सिचुएशन है. ये सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई है. 60,000 का जो डेट था वो रिड्यूस होकर 56,000 हुआ अराउंड इन द मार्च 2024, और कंपनी उस डेट के अमाउंट को मैनेज करने की कोशिश कर रही है. बट दिस इज वेरी क्लियर कि कंपनी लिवरेज का बहुत ही इफेक्टिव यूज कर रही है. कंपनी के फिक्स एसेट्स के नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो we see very clearly that the fixed assets are increased mindfully year on year basis from 106 to 110 to 111 and so on. Again, all these numbers are in crores. When we look to the investments made by the company, the investments are good. 14,000, 15,000, and 22,000 as on date. So the balance sheet is healthy. And when we talk about the cash flow statement, three major activities: operating, investing, and financing activities. Up. Let's try to understand this very clearly. Operating activities from last 4 years giving the positive cash flows. It means good profits from business or cash profits from business operation. This number, that is investment activity, is negative, showing the outflow done in various investment avenues and PPE, that is property, plant, and equipment. Cash flow from financing activities again negative, which shows the outflow done on account of repayment of certain loan amount. So cash flow statement again shows a very strong position of the company. अगर इन्वेस्टर्स के बारे में बात की जाए तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट 34% पे, FIIs की होल्डिंग्स 28% पे, DII की होल्डिंग्स ऑलमोस्ट 24 से 25% की रेंज में रही. Now, let's talk about certain important ratio of Hindalco, which shows very clearly कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग लगभग 10 से 11% के आसपास है. कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो अराउंड 0.53 है. बड़ी कंपैरिजन काफी इफेक्टिव बन जाता है जब हम पीयर से कंपैरिजन करते हैं. तो जहां मार्केट में मीडियम पी 26 है, वहीं कंपनी का पी अराउंड 9.23 है. तो ये एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है. अगेन, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. I can be wrong, right? So that is one thing. When we talk about the ratios, the return on capital employed is significantly lower as compared to the market benchmark, and that's why कहीं ना कहीं PE पर आप एक impact देख पा रहे हैं. Return on capital employed की हमने बात करी. Return on equity is almost around the industry expectation, 11 to 10 यहाँ पर settle हुआ है. And so this is the complete analysis, fundamental analysis of Hindalco, and let's get into now the technical analysis of the company. So for technical analysis, we'll get into the chart, or
अब जरा हम ईयरली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को समझें कि इस स्टॉक में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह के मूवमेंट रहे हैं। मतलब ये स्टॉक में वॉलेटिलिटी तो काफी रही है हर साल, हम अगर देखें तो। अगर हम मंथली बेसिस पे इस चार्ट को समझें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 4 मंथ्स 5 मंथ से काफी डाउन 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 लगाते हुए ये स्टॉक आज 606 के रेट पर ट्रेड कर रहा है। किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट लेने के लिए हमें उस स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पर, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखना होता है। अब अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये स्टॉक एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम से नीचे की ओर आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर डिमांड कुछ यहाँ के लेवल्स पर बनती है। मंथली टाइम फ्रेम पर हम स्टॉक का लोकेशन देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर हम स्टॉक के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड क्या रहा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन easily see simple moving average 50 is green, which shows that trend is up in the stock. But वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद में हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पर हम मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट देखते हुए ही हमारी एंट्री प्लान करते हैं। सो इफ दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम जिसका सपोर्ट यहाँ मिल रहा है कुछ, तो एंट्री प्लान करने के लिए हमें एक एक्सप्लोसिव मूव देखना होता है। एक्सप्लोसिव मूव देखने के लिए हम यहाँ आएंगे, एंड हियर वी गो। सो किसी भी स्टॉक में एंट्री, स्टॉप लॉस या टारगेट लेने के लिए हम एक्सप्लोसिव मूव देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी एंट्री यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर के आसपास मार्क करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एंट्री मार्क कर देना है। साथ में मुझे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बिकॉज दिस इज द कोर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैंने 26 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो मैंने कम से कम 1:2 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। तो अकॉर्डिंगली मुझे टारगेट मार्क करना है। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच। एंड विद दिस I think we are great to conclude this. And if you want to build your knowledge asset, do buy this course, which is the Freedom 5.0, which will talk about the financial freedom blueprint. It will also provide you 5 other courses, and the name of these 5 other courses is as under. Now, let me tell you, if you are a non-finance person, if you want to understand the language of money, if you want to understand how accounting happens, if you want to decode the financial statement and you find too much overloaded with information, this level of program, that is the Freedom 5.0 bundle, is a complete solution to all your query. It will also help you to plan your personal finances as well with Freedom Budget Blueprint and Mission Hackathon, which covers the technical stuff of all these 5 different programs. All this at a very nominal price of rupees 5,000. And with this, you will get one complimentary free session of connecting with me, wherein you can resolve your doubts around any of the investments, um, any of the way or means where you are stuck somewhere with regard to your business finance, personal finance, or investment journey. The link to buy this course is given in the description. So, with this, let's meet you in the next week, somewhere around the weekdays, and see you in the next video. Do subscribe and like the channel. Do share this with your loved and dear ones so as to give them the best gift of financial empowerment. Do subscribe the channel. See you in the next video.